Good morning, everyone. So, in yesterday's class, we have discussed about the unit conversions, isn't it? So, you should be familiar with the unit conversion to solve the problems because this subject deals with the numericals. Means you are going to solve more number of problems. Okay, and from the point of examination, so you will get only 20 to 25 marks of theory, and remaining things will be numerical problems only. So from that point of view, unit conversions are very important. For that reason only we have discussed about the unit conversion for last 2 to 3 classes. Okay. So now we shall start the syllabus, actual syllabus of the subject. So I will start with the Module 1. So before that, I want to discuss the title of the subject. What is the title of the subject? Mechanics of material. Okay. So before you know the meaning of this mechanics of material, so first I want to discuss some of the basic definitions. Okay, so that we can understand the definition or the meaning of the title of the subject. Okay, so what can anyone tell me what is the force? What is the definition of force? How do you define force? Energy. Okay. And it is what? Okay. Okay. So actually, so definition of force, you will get many definitions in different books. Okay. In simple words, the definition of force is it is an external agent to push or to pull the body. Okay. Usually, when we use external agent and we use some extra effort, okay, to push or to pull the body, so that extra effort or external agent we call as a force. तो कभी भी आप एक बॉडी को फोर्स कब यूज करते हैं? जब भी हमको कुछ मूव करना है, कुछ पुश करना है, तो जब हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, that is nothing but force. Similarly, when we use to pull something, we use again some external agent, so that is nothing but force. Okay, and sometimes we use this force to speed up the motion of the body. Okay, अब एक body move होता रहता है, और भी इसको speed करना बोले तो again we have to apply some force. Are you getting? If the vehicle is moving, okay, if you want to increase the speed again, so again you have to accelerate. Accelerate means the engine is producing more power. अगर power कम है तो accelerate दिए तो is it possible to increase the speed of the vehicle? No. So sometimes we use this force or external agent to increase the speed of the motion of the object. Okay. And similarly, sometimes this external agent or this force is also used to stop the motion of the body. अगर एक body move होती रहती है, if you want to stop it, you have to apply the force. अगर force नहीं बोले तो वो body उसको भी लेके जाती है. Am I right or wrong? So any external agent which is used to push or pull the body, that is called force. This is a simple definition. Okay, but this force has many definitions. As I said, sometimes we use external agent to speed up the body or to stop the body or to slow down the body. अगर आपको slow करना है बोले तो भी अब एक कुछ जा रहा है. If I pull, then the speed of that body will automatically decreases. Okay, like that, the force has different definitions. Okay, in simple words, it is an external agent which is used to push or to pull the body. Okay, ये push और pull the body दो वर्ड जो है ये सभी में आ जाते हैं. अभी समझो आपको increase एक body move हो रहा है, उसको increase उसका speed increase करना है तो आपको push करना है. हमारे डर are you getting? अभी आप एक बॉडी जा रहा है, उसको आपको स्लो करना बोले तो यू आर पुलिंग द बॉडी. Are you getting?
तो ये जो दो वर्ड है इसलिए यूज कर रहे हैं, पुशिंग एंड पुलिंग, ये सभी को अप्लाई हो जाता है। अगर आपको स्पीड इंक्रीज करना है तो आप पुश कर रहे हैं, अगर आप स्पीड को कम कर रहे हैं तो पुल कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं बोले तो भी आप पुल कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं। Am I right or not? So it is an external agent which is used to push or pull the body. Okay, and the unit of force is Newton. Okay, we have already discussed this one, and in short we write it as capital N. Okay, are you getting? And next definition I want to discuss is motion. What do you mean by motion? What do you mean by motion? When you say that the body is under motion, is this book is under motion now? No. If I this book, if I keep from this position to this position, so now I can say that it had some motion. Then only it has replaced. Am I right or wrong? So motion is nothing but change in the position of the body. Suppose if any body, okay, changes its position, then we can say that that body has motion. अगर बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको बॉडी को मोशन है करके। ओके, अभी हम एक बाइसिकल मूव होते रहते या व्हीकल मूव होते रहते, उसको भी मोशन है करके बोलते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम द पोजीशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। फॉर दैट रीजन वी कॉल इट एज ए the vehicle is under motion. समझ में, बॉल मूव हो रहा है, बॉल इज अंडर मोशन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसका पोजीशन जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। Are you getting? For that reason we say that the ball is under motion, the vehicle is under motion. Okay, like that. The change in the body, the change in the position of the body, so that is nothing but motion. Okay, so these are the two important definitions. So I am going to use to define the title of the subject. Okay, so now I want to define what is mechanics of materials. So here this title consists of how many words? Mainly two words. Am I right? This title consists of how many words? Mechanics and material. Okay, first I want to tell you about what is mechanics. So we should know what is mechanics. Okay. So here mechanics is nothing but the study of force and motion. Why I defined those definitions? This is the reason. Are you getting? Mechanics is nothing but the study of force and motion. We call it as a mechanics. Study of force and motion means what? How much force is acting? Study of force means how much force is applied, how the force is applied, in which direction it is applied. Okay, so this वो force के बारे में स्टडी करने के लिए क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फोर्स, मतलब वो कैसा अप्लाई कर रहा है, उसका फोर्स, वो फोर्स का इफेक्ट क्या है, आप जिस पे अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स का इफेक्ट उस पे क्या इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. So this all comes under the study of force. Similarly, study of motion is also nothing but like that only, studying about the motion, in which direction the motion is taking place, at what speed the motion is taking place. Okay, what is the effect of that motion to another body? So that all nothing but study of motion. Okay, study of force and motion we call it as a mechanics. Okay, and in this title there is one more word, that is material. So now what do you mean by material? How do you define? Yes, we call this also as a material. This duster also we call as a material. Anything you take, we call as a material. But how do you decide? How do you decide about the materials? So anything which is made up of a matter, we call it as a material. Are you getting? Anything which is made up of a matter. But what is matter? I said anything which is made up of a matter, we call it as a material. But we don't know matter itself. Yes, anything, any substance which occupies space and has mass. मतलब
जिसका जो भी आप चीज दे रहे हैं, ओके, अगर उसका वेट है मतलब मास, और उसको अगर आप कहाँ पे आप प्लेस करें बोले तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको मैटर होगा. ओके, इवन आई कैन कॉल दिस chalk as a matter because it has some weight and it has, if I place anywhere it occupies space, then I can call this as a matter. Okay, if you take this stone, that is also a matter. If you take wood, that is also a matter because it has space and space and mass. Yes, we can call it a matter. Okay, and matter again they are classified in different forms. Solid, liquid, gas. That is not no need to discuss about that. Okay, matter में भी तीन types of solid, liquid, gas. Okay, so no need to discuss about that. Anything which is made of matter is nothing but which occupies space and has mass. Usually these matters are made up of atoms and molecules. अभी वो कैसे बने होते हैं बोले तो atoms और molecules से बने होते हैं. वो that is internal structure, वो that is no need to discuss about that. Okay, anything which has mass and occupies space we call it as a matter. Okay, if you take stone that has mass and it can occupy space, that we call as a matter. Wood, if you take wood, that also occupies space and has mass, so that also we call as a matter. Okay, and anything which is made up of a matter we call it as a material. Which is anything which is made up of a matter. That we call as a material. Okay, here we can see that this desk is made up of a wood. Okay, so we can call this desk also material. This duster is also made up of a wood. So this also we call as a material. Okay, if you take anything, if you take glass materials, okay, some materials are you are preparing by means of glasses. So that is also we call as a material. Anything which is made up of a matter we call as a material. Okay, so now join these two words to define the title of this subject. So now join these two words. We discussed about what is mechanics. We discussed about what is material. Okay, so here mechanics means what? Study of forces and motion. Material means what? Anything which is made up of matter. Okay, so now the definition of mechanics of materials is defined as the study of behavior of the material under the action of forces and motion. Are you getting my point? Study of behavior of the material under the action of forces and motion. Forces and motion ये मैकेनिक्स के डेफिनेशन के अंदर है. ओके, मटेरियल क्या है वो मालूम है आपको. So the behavior of the material under the action of forces and motion. Behavior of the material means what? What is happening to the material due to the action of force and motion. जब आप एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में क्या चेंजेस हो रहा है, क्या बॉडी मूव हो रहा है, क्या बॉडी वहीं पे है. ओके, और वो बॉडी के अंदर का शेपिस्ट अभी सॉफ्ट मटेरियल लिया आप तो उसको फोर्स अप्लाई किए बोले तो यू हैव टू टेक ग्रैपर कि just to apply some force but by just squeezing. जब जस्ट आप बॉल को दबाए, स्मूथली बॉल होता है उसको दबाए बोले तो उसका शेप चेंज हो रहा है. इट मींस when you are applying some force on that ball, it is getting its changing shape. Are you getting my point? यहाँ पे study of force, what is the effect, the behavior of the material under the action of forces and motion means what are the effects what are the changes are taking place in the material due to the action of forces and motion. जब एक बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं. जब आप एक बॉडी को आप मोशन दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं. So that study we call it as a mechanics of materials. Are you getting? The study of behavior of the material under the action of forces and motion. That's all. इतना चलो. Are you getting? कुछ बॉडीज में अब मैं फोर्स अप्लाई करूं फिर भी ये मूव भी नहीं हो रहा है, इसका शेप भी चेंज नहीं हो रहा है. Are you getting it? So that is also one type of study. So there is no changes are taking place on the body even though some forces are applied. So this is what study. Are you getting? अभी कुछ कितना भी फोर्स अप्लाई करो कुछ भी इफेक्ट नहीं होता. So that is also one type of study.
हम इतना फोर्स अप्लाई कर रहे थे कि वो कुछ भी नहीं हुआ उसको। ऐसे आप goes on increase the force at some point at some force the body will break down. Are you getting or not? अब ये वॉल इस लो एक पर्टिकुलर लोड तक वो कुछ भी नहीं होगा उसको, और मैं ऐसा लोड ज्यादा करते करते क्या करते हैं बोले तो इट विल ब्रेक डाउन। Are you getting or not? So this is what study. इतने लोड तक उसको कुछ नहीं हुआ, इतने लोड के बाद ज्यादा लोड अप्लाई किए बोले तो वो उसका स्ट्रेंथ खत्म हो गया, इट गॉट ब्रेक डाउन। So this is what study of forces, behavior of the material under the action of forces. Similarly, motion also. Study of behavior of the material under the action of motion. Okay, आप एक बॉडी मोशन में है, ठीक है, आप एक बॉडी की मोशन दे रहे हैं तो उसके अंदर वो बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। Are you getting or not? So that is nothing but mechanics of materials. Okay, but why this subject you need to study? Being a mechanical engineer, why you need to study? And even this subject is also there for civil engineers. अभी third sem में civil engineer students को same subject, just the title is different. Strength of materials. उनको strength of materials करके आपको mechanics of materials करके, okay. But the content or the syllabus, okay, everything is same. Okay, but why we need to study this subject? हम क्यों पढ़ना चाहिए? हमको कैसे यूज होता है? कहाँ पे हेल्प होता है? Yes, here if you want to prepare any product, okay, आपको क्या भी बनाना है तो उसके स्ट्रेंथ के बारे में आपको जानना जरूरी है। स्ट्रेंथ कैसे जानते हैं आप? ये कितना फोर्स के लिए वो withstand करता है। Are you getting or not? Suppose if you take the example of piston only, piston में lot of piston के ऊपर इंजन में lot of forces are generated. अगर आप रबर यूज करें तो is it possible to transmit the force? Why we are using that what particular material? आप इंजन का मटेरियल जो है कास्ट आयरन का रहता है, Are you getting? और ये स्टील रहता है पिस्टन का, तो वो क्यों यूज करते हैं? क्यों बोले तो वो पर्टिकुलर जो फोर्स डेवलप होता है, ठीक है, तो वो मटेरियल करेक्ट ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये सब आपको डिजाइन करने के लिए, आपको ये करने के लिए, so you people need to study this subject. Just I have taken one example like that. There are many examples out there. Even if you take the machine, अब एक मशीन रन हो रहा है, okay, स्मॉल मशीन लो कौन सा भी, ठीक है, वाश में मशीन लो, मशीन बोले तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स मोशन में, ठीक है। अभी वो कुछ वो हर एक पार्ट में एक पर्टिकुलर लाइफ रहता है, समझ रहे? अभी ये वॉच के पार्ट्स का कितना लाइफ है वो कैसे डिसाइड करते हैं? बिफोर वो आप तुम्हें बनाने से पहले डिसाइड करते हैं इतना कंटिन्यूअस मोशन हुआ बोले, इतने साल तक इतना कंटिन्यूअस इतने स्पीड पे वो मोशन हुआ बोले तो इतने दिन होने के बाद उसकी लाइफ खत्म होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद वो कब उसका ब्रेकडाउन होता मालूम है। तो बनाने से पहले आप ये सब स्टडी कर रहे हैं। आप व्हीकल बना रहे बोले तो व्हीकल में कौन सा एक नट बोल्ट पार्ट बनाना बोले तो उसके बारे में पूरा स्टडी किया जाता है, वो नट कितना फोर्स पड़ सकता है, और वो नट बोल्ट अभी व्हीकल मूव हो रहे बोले तो वो भी नट बोल्ट भी मोशन में रहते हैं, समझ में? तो कितने स्पीड तक वो अभी नट बोल्ट भी यूज करना है जो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए, ओके। अभी वो नट बोल्ट है नहीं, इतने स्पीड पे मूव आते कि वो होल्ड कर सकता क्या नहीं, ये सब हम स्टडी करने के बाद जब बनाए नट और बोल्ट। Are you getting my point? So for that reason, so if you want to design, if you want to produce, or if you want to make any product, okay, so you have to go for the analysis. Means आपको फोर्स कितना फोर्स के उसका कितना विथस्टैंड कर सकता फोर्स, ओके, उसको कितने कैसा मोशन लास्ट कितना पॉसिबल है। अभी आप कुछ देखते रहो, व्हीकल बाइक में लो, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर स्पीड गए तो कुछ भी नहीं होता, एक बार कहाँ तो क्या भी बहुत हाईवे पे बहुत स्पीड पे गए हैं, कौन सा तो पार्ट एक निकल गया होगा, समझ में आ रहा? तो इसका मतलब क्या है, उसका वो जो ये था नहीं, वो स्ट्रेंथ खत्म हो गया, और तुम्हें क्या भी तुम्हें स्लो चलाते गए वो हटाता हो,
वो मोशन का लिमिट जो है तुमने क्रॉस किया है, इसलिए वो निकल गया। समझ में? इवन इफ यू होल्ड द कैप ऑन द हेड, ओके, एक पर्टिकुलर स्पीड तक डाउन मारते जब क्या गिरती है, वो तुम्हें हाईवे में जाओ, जरा थोड़ा स्पीड से मारोगे तो कैप निकल हो जाता है। मतलब जो आप जो कैप डाले रहते हैं उसका एक पर्टिकुलर ईयर था, होल्ड करने का एक ईयर था, कैपेसिटी, वो एक पर्टिकुलर मोशन। सो लाइक दैट द जस्ट आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ ओनली व्हीकल। वैसे आप बहुत सारे मशीन से मैकेनिकल की मशीन, बहुत हर मशीन में मैकेनिकल इंजीनियर बनाते हैं। इवन इफ टेक द क्रेन्स, ओके, कौन सा भी मशीन हो, ओके, behind that mechanical engineers are there. Okay, so this is what about the title of the subject, mechanics of material, the study of behavior of the material under the action of forces and motion. Okay, so next we shall study about the types of forces. First one is tensile force. Actually, there are many types of forces are there. Okay, but from the point of your syllabus, okay, here there are only 3 types of forces are there. वैसे तो बहुत सारे forces हैं, बहुत type के forces हैं, impact force वो ये, okay, वो सब करा रहते हैं. But from the point of your syllabus and from the point of the first module, here there are 3 types of forces are there. Okay, we will discuss one by one. The first one is tensile force. So here I will take one body object, okay, part, कौन सा भी आप क्या भी लो, बॉडी बोले तो कौन सा भी प्रोडक्ट लो, तो एक डस्टर करके समझो, ओके, क्या है, क्या भी है, बॉल करके समझो। मैं कभी भी यानी बॉडी ऑब्जेक्ट पार्ट करके बोला नहीं, तो आप क्या भी इमेजिन कर सकते हो। भाई बॉडी बोले तो बीच में ह्यूमन बॉडी के जैसे समझ रहे हैं? बॉडी बोले तो कौन सा भी एक मटेरियल, यू कैन टेक एनी मटेरियल। ओके, सो हियर दिस इज अ बॉडी, हियर आई टेकन द बॉडी। ओके, सो हियर usually forces are shown diagrammatically by the arrow marks. अभी forces हैं ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बोले तो diagrammatically arrow marks से करते हैं. So suppose if the forces are acting away from the body, okay, if the forces are acting away from the body like this, so here I will apply the force like this, मतलब ऐसे खींच रहा हूँ बॉडी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फोर्स जो है बॉडी से दूर जा रहा है. If the forces are acting away from the body, okay, here you can आप एक ही डायरेक्शन दिखा दीजिए चलता, no problem. Okay, or you can show the direction here also. यहाँ पे क्या है डायरेक्शन, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, it is moving away from the body. So this type of forces we call as a tensile forces. Are you getting my point? The forces which are acting away from the body, so that force we call as a tensile force. लिख लेना को, मैं नोट्स में सब कुछ है, मैं नोट्स है, ये सब कुछ है, no need to write. Okay, जैसा मैं समझा हूँ, जैसा भी बोल रहे हैं, watch words है, watch definition है. Okay, so here this is what the tensile force. When the forces are acting away from the body, that force we call as a tensile force. Okay, and the next one is compressive force. Opposite of this one. Opposite of the tensile. So when the forces are acting towards the body like this, अगर मैं ऐसा प्रेस कर रहा हूँ बोले तो हम यहाँ पे फोर्स क्या कर रहे हैं, बॉडी की तरफ दबा रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट कॉम्प्रेसिव फोर्स. कभी कभी यूज करते हैं कॉम्प्रेस करो, मतलब यार अप्लाइंग द फोर्स टुवर्ड्स द बॉडी. आर यू गेटिंग? अभी आप कॉम्प्रेस्ड फाइल लाइक बोल रहे हैं, फाइल कॉम्प्रेस कर दिया बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या, ज्यादा है तो कम कर रहे हैं. अभी आप दबा रहे हैं बोले तो कम होगा,
Are you getting now? That is the meaning of compressive. These are the general words: tensile, compressive. Okay. So when the forces are acting towards the body, here you can see that the forces are acting towards the body. So this type of force is called as a compressive force. इतना सा है क्या नहीं? And third one, that is last one, shear force. Shear force, you can draw like this. Okay, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं. Okay. Along the surface, or parallel to the surface of the body. If the forces are acting along the surface, okay, or if the forces are acting parallel to the surface, और एक word use करते हैं parallel के बदले tangential. This is the technical word tangential. Tangential बोले तो parallel. Okay, you just remember because in the textbook they have used the word tangential. The forces which are acting tangential to the surface of the body, that force is called as a shear force. Okay, or आप ऐसे भी लिख सकते हैं the forces which are acting parallel to the surface of the body. यहाँ पे देख सकते हैं एक force देखो, एक force जो parallel body को, are you ready? If you take this force, this is also parallel to the body. If you take this force, this is also parallel to the body, isn't it? So here shear force is nothing but if the forces are acting tangentially to the surface or parallel to the surface of the body, so that force we call as a shear force. Okay, is there any doubt? Here tensile and compressive forces are acting perpendicular to the surface. Here you can see that ये surface है, यहाँ पे perpendicular act हो रहा है. Are you getting or not? यहाँ पे भी देख सकते हैं perpendicular act हो रहा है. ये दो forces है perpendicular act होते हैं. Whereas this shear force is acting parallel to the surface, tangentially to the surface. Are you getting? Yes, sir. And the unit of all these forces, okay, न्यूटन होंगे. आप कौन सा भी फोर्स लो, ये छोड़ के और भी कौन से अलग टाइप के फोर्स लो, मगर उसका यूनिट क्या रहता? न्यूटन ही रहता. ओके, ऐसा नहीं कि ये अलग फोर्स है बोलो तो इसका अलग न्यूटन. All forces have the same unit, that is Newton. Okay, so now we shall go for the next topic. Is it clear? Yes, sir. So now very important topic of this module or this subject. So before to go for that topic, so I want to discuss about one or two examples. Okay, वो टॉपिक को आप समझने के लिए थोड़ा और अलग डिस्कस करना जब आपको वो आसानी से समझना. Okay, just I will take the example. If I throw a ball on the wall, okay, with some force, so what happens to the ball? It will come back that ball to us with the same force. Am I right? Yes, sir. जब आप एक बॉल पे फेंकते हैं, ठीक है, तो बॉल सेम फोर्स से वापस आता है. Are you getting? Are you getting? Similarly, and one more example. If I press the spring with some force, okay, when I remove that force, again that spring will give back the same force but in the opposite direction. जब आप बॉल फेंकते हैं वॉल पे, तो बॉल वापस सेम फोर्स से आ रहा है बट वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट. आप जो बॉल फेंके थे उस डायरेक्शन में जा रहा है. अब वो जो बॉल आ रहा है सेम स्पीड सेम फोर्स से आ रहा है मगर डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट में आ रहा है. So here now I will take the example of spring. So when you apply some force on the spring in one direction and when you remove that force, the spring will give back the same force but in the opposite direction. So what you are understanding by these two examples? Yes, exactly here. As per the Newton's third law of motion, what it says? For every action, there is equal and opposite reaction. Okay, जब भी आप कहीं पे भी आप फोर्स अप्लाई किए हैं, उसके अपोजिट वहाँ पे एक फोर्स जनरेट कर रहा है और वो कैसे रहता है? वो अपोजिट रहता है. Are you getting my point?
जब भी कहाँ पे भी लो यूनिवर्स, आप कहीं भी एक थोड़ा कहाँ पे भी माइन्यूट फोर्स भी अप्लाई किया हैं तो उसको वहाँ पे अपोजिट फोर्सेस जनरेट कर रहे हैं, और वो कैसे रहते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Are you getting? As per the Newton's third law of motion, for every action there is a equal and opposite reaction. Okay. But here मैं अभी यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ। अभी मैं फोर्स अप्लाई किया, अभी यहाँ फोर्स अप्लाई करूँ, बट यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है अपोजिट फोर्स? If you are seeing here, I am not getting the opposite forces. अभी यहाँ डेस्क में मैं ऐसा पुश कर रहा हूँ, वहाँ पे कुछ अपोजिट फोर्स ही नहीं दिख रहा। उसका फोर्स तुम्हारे मतलब जो अप्लाई करने का फोर्स है तुम्हारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। So that's what here अभी मैं फोर्स अप्लाई किया नहीं, डेस्क पे फोर्स अप्लाई किया, डेस्क पे फोर्स अप्लाई किया, ऐसा नहीं कि इसके अपोजिट फोर्सेस जनरेट नहीं है। So yes, obviously, and it should be some opposite forces are developed, but those forces are developed inside the body. Okay, और वो फोर्सेस जो है ना, वो फोर्सेस जो है ना उतना ज्यादा नहीं कि आपको दिख सके। Are you getting my point? Obviously, अभी मैं फोर्स अप्लाई करूँ बोले तो इसके अपोजिट फोर्सेस डेवलप करते हैं, वो कहाँ पे डेवलप करते हैं? ये बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं। Are you getting my point? And those forces are opposite to the applied forces. वो अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप करते हैं, बट आपको नहीं दिखते रहते हो, इंटरनली डेवलप कर रहे हो। आपको नजर कब आता बोलो? जब आप और भी ज्यादा अप्लाई करते गए नहीं, जब वो भी अपोजिट फोर्सेस डेवलप करते जाता और उसकी कैपेसिटी खत्म होती नहीं, जब तुम्हें फोर्स अप्लाई करते उसकी कैपेसिटी खत्म होती नहीं, ब्रेकडाउन होता नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि उसके अपोजिट फोर्सेस को जनरेट करने का होता नहीं, वो खत्म हुआ। समझ में आ रहा? अभी मैं ये फोर्स अप्लाई करूँ, ये ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? ये रेजिस्ट कर रहा है। कैसे रेजिस्ट कर रहा है? रेजिस्ट करना बोले तो क्या, अपोजिट फोर्स आते तो रेजिस्ट होगा। आर यू गेटिंग नॉट? और मैं कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करते गया, वो उसकी कैपेसिटी कितने उसके अपोजिट फोर्सेस डेवलप करते जाता है। जब उसकी कैपेसिटी खत्म होती नहीं, वो ब्रेकडाउन होता है। जब भी कौन सा ही मेटेरियल ब्रेकडाउन हो रहा है बोले तो उसकी कैपेसिटी जो ये रहती है वो खत्म हो जाती है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू से इज whenever you apply some force on any body, okay, whenever you apply some forces on any body, some opposite forces are generated inside the body. Are you getting my point? और वो अपोजिट फोर्सेस कैसे रहते हैं? वो तुम जो बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको ये क्या कॉम्पेंसेट करने जनरेट होते रहते हैं, और भी लोड डालते गए एक लेवल तक वो रेजिस्टेंस फोर्स और अपोजिट फोर्स डेवलप करते जाता है। जब उसकी कैपेसिटी खत्म होती है रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप करने की, ब्रेकडाउन होता है। और वो टेक्निकली वो जो अपोजिट फोर्सेस रेजिस्टेंस फोर्सेस बॉडी जो डेवलप करता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। The internal opposite forces which are developed inside the body due to the application of external forces. Are you getting my point? Stress is nothing but the internal opposite forces or resistance forces which are developed by the body and the external forces are applied. आप ये तुम्हारे बोर्ड नोट्स में लिख सकते हैं और एग्जाम में पूछता है डेफिनेशन बहुत बार पूछा है, डिफाइन स्ट्रेस करते हैं। स्ट्रेस इज नथिंग बट, और इंटरव्यूज में बहुत पूछते हैं, तुम्हारे वाइवा में भी बहुत पूछते हैं, लैब एग्जाम के वाइवा होते हैं फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, फाइनल ईयर कहते हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस समझो, फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट इज द स्ट्रेस। इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप्ड बाय द बॉडी, ओके, ड्यू टू द external forces are applied, due to the application of external forces. और internal resistance forces क्यों डेवलप हो रहे हैं? As per the Newton's third law, for every action there is a equal and opposite reaction. ऐसा नहीं कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका अपोजिट कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। In the whole universe it cannot be happen. जब भी आप कहाँ पे भी आप फोर्स अप्लाई करो आपको अपोजिट फोर्स आना ही आना। बट यस, बट वो कुछ फोर्सेस आपको नजर आते हैं, कुछ फोर्सेस नहीं नजर आते। आर यू गेटिंग और नॉट? बट इंटरनल फोर्सेस आर डेवलप्ड बॉडी में। आप कौन से बॉडी आप वाल में सिर्फ में हाथ लगा बोले तो भी सब आई एम अप्लाइंग सम काइंड ऑफ फोर्स, और वो वॉल पे नहीं कुछ अपोजिट फोर्सेस डेवलप करा था अंदर से, ओके। सो दोज फोर्सेस आर नथिंग बट इंटरनल
opposite force or internal resistance forces. In short, we call it the stresses. Okay, अब हमें बोलते स्ट्रेस बहुत हुआ। स्ट्रेस कब होता है? तुम्हें ऊपर से ज्यादा लोड ले पा। Are you getting or not? हमें स्ट्रेस क्यों यूज करते हैं मालूम इसलिए बहुत सारे लोगों को हम जनरली बहुत बार यूज करते हैं। बहुत स्ट्रेस को आदमी से करते हैं। तुम्हें स्ट्रेस कब होता? चुप सोए तो होता है। तुम ज्यादा वर्क करे तो होता। अब ज्यादा वर्क करने बोले तो तुम्हारे बॉडी में ज्यादा फोर्सेस अप्लाई करते हैं। समझो some kind of you are applying some effort on the body. उसके लिए आपके अंदर एक अपोजिट फोर्स डेवलप होगा। वो अपोजिट फोर्स डेवलप होने की वजह से आप क्या होता है टायर्ड होते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए तुम्हें क्या बोलते हैं वो टायर्ड हो मतलब स्ट्रेस हुआ होगा। बहुत स्ट्रेस हो गया आज। स्ट्रेस कब डेवलप होता? तुम क्या भी तुम्हारे अभी माइंड पे बहुत स्ट्रेस हुआ होगा। माइंड पे स्ट्रेस हुआ तो क्या तुम बहुत ज्यादा सोचे आप सोचिस नहीं किए बोले तो आपको स्ट्रेस ही फील होगा। अरे गेटिंग और दिस इज व्हाट द जनरल वर्ड स्ट्रेस क्यों यूज करते हैं दिस इज अरे गेटिंग और द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स व्हिच इज डेवलप्ड बाय द बॉडी व्हेन द फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन इट। आप तुम्हारे ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। मैं कितने बार बोलूं अलग अलग सेंटेंस में बोले सर समझ में आ रहा है? द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्सेस okay which are developed by the body when the forces are applied on it. When the forces are applied तो ऐसे लिख सकते हैं when the forces are applied on the body some internal opposite forces or some internal resistance forces are developed in the body. Those internal resistance forces equal to stress. ऐसे भी लिख सकते हैं। तुम्हारे ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बुक का डेफिनेशन ही ऐसा हाँ ये जोड़ यहाँ रखना द यहाँ से हाँ ये यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं। ओके ऐसा कौन से सब्जेक्ट में नहीं रखना। Okay, this is what about the stress. Okay, and here this stress is denoted by sigma. The symbol used to denote the stress is sigma. Sigma. Okay, and the formula to find out the stresses developed in the body is force divided by cross sectional area. Force divided by cross sectional area. कैसे बोले तो suppose here I will get one body. Okay, so I will apply. अभी ये बॉडी पे मैं फोर्स अप्लाई नहीं करा बोले तो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप नहीं होता मतलब स्ट्रेस जीरो है। And I apply the force here. Suppose if I apply the force for example 10 Newton मतलब आप यहाँ पे एक बॉडी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप किया। आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? फोर्स नहीं बोले तो स्ट्रेस भी नहीं रहता। जब फोर्स है बोले तो स्ट्रेस भी रहता। अब वो स्ट्रेस इसके अंदर कितना डेवलप हुआ वो कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया समझो 2 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो जहाँ पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है अभी ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा फोर्स। आर गेटिंग और नॉट? ये सरफेस पे अप्लाई हो रहा ये सरफेस का एरिया। यहाँ पे फोर्स कितना है वहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना होता क्या है डिवाइडेड बाय समझो ये इसका एरिया जो है यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है इसका एरिया जो है 2 मीटर स्क्वायर है समझो। ओके तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 लेना तो कितना हुआ 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5 न्यूटन पर वो यूनिट बार बाद में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे 5 हुआ तो यहाँ पे स्ट्रेसेस आर डेवलप 5 इन दी बॉडी। ओके एंड व्हाट विल बी द यूनिट व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस? यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। एंड यहाँ पे देखो आप वैल्यू जो है मीटर स्क्वायर में ले सकते तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर सपोज इफ यू हैव टेकन दिस वैल्यू इन mm स्क्वायर और यहाँ पे एरिया मिला आपको mm स्क्वायर में लेना और यहाँ पे कैलकुलेट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो है न्यूटन पर अगर ये वैल्यू मीटर में है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना अगर ये mm में है तो न्यूटन पर mm स्क्वायर लेना। अब यहाँ पे mm में ले जाओ तो mm स्क्वायर सो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इतना स्ट्रेसेस डेवलप हुआ इसके अंदर मतलब इतना रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप हुआ इसके अंदर ये फोर्स की वजह से। सो दिस इज व्हाट अबाउट द स्ट्रेस। आर गेटिंग? इधर एनी डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। When you go for the MTech, when you go for PhD,
there also you will come across this concept stress. बहुत important है. तुम्हें कौन सा भी चीज डिजाइन करना बोले तो एक पैरामीटर है इसे कंसीडर करना चाहिए. विदाउट दिस यू कैन नॉट प्रोड्यूस. एक मामूली से मामूली बोला है नट एंड बोल्ट, वो भी मैन्युफैक्चर करना बोले तो ये पैरामीटर को कंसीडर करके कुछ करो. समझ में आ रहा है? Are you ready? This is what about the stress. Okay, it is denoted by sigma and the unit is Newton per meter square or Newton per mm square, or if the values are in centimeter, Newton per centimeter square, like that. Okay, again these stresses are classified into three types. So shall we discuss or shall we please cut off the study? Simple है बहुत. Is there any doubt in this? कुछ डाउट है? Now we shall discuss about the types of stresses. Again there are many types of stresses are there. अब जितना जैसे जैसे फोर्स है वैसे स्ट्रेस भी रहता है. समझ गए? हम कितने फोर्सेस एक्सप्लेन करें? 3 फोर्सेस. यहाँ पे स्ट्रेसेस में भी 3 टाइप है. Okay, so first one is tensile stress. Before actually, sometimes direct normal stresses, tensile stress, compressive stress, and shear stress. So first I will explain the tensile stress. So here I will take the body. So I am applying tensile force. Tensile. So this is the tensile forces. Here the forces are acting away from the body. So it is a tensile force. Am I right? Okay. So here the stresses which are developed due to tensile force, that stress equal to tensile force. अगर बॉडी के अंदर स्ट्रेस जो है टेंसाइल फोर्स की वजह से डेवलप हो रहा है तो उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं. और टेंसाइल फोर्स क्या है आपको मालूम है. Are you getting? That's it. The stresses which are developed due to tensile forces we call it as tensile stress. Okay. इतना. And to calculate the tensile stress, okay, tensile stress is equal to same formula. अब stress का formula यूज करेंगे वही formula. Tensile stress is equal to, and it is again denoted by sigma. Okay, tensile force. अभी ये force tensile force है. Tensile force divided by cross section area. जहाँ पे force act कराने वो area. Okay, are you ready? Yes, sir. Similarly, compressive stress. What is compressive stress? Compressive stress क्या है? Compressive force क्या है? Towards the body. If the forces are acting towards the body, that force we call as a compressive force. अभी compressive force अप्लाई कर रहे हैं बोले तो ऑब्वियसली स्ट्रेसेस डेवलप होना, और जो स्ट्रेसेस डेवलप compressive force से हो रहे हैं तो उसको हम compressive stress बोलते हैं. यहाँ पे compressive forces है तो इसके वजह से यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें बोले तो ऑब्वियसली सम अपोजिट फोर्सेस और स्ट्रेसेस विल डेवलप इन द बॉडी, एंड दो स्ट्रेसेस which are developed due to compressive forces we call as a compressive stress. Again, this compressive stress is calculated by the same formula. Instead of this tensile force you have to use shear force. Okay, is there any doubt? So last one, same. Shear stress. Shear stress बोले तो क्या है? Shear force बोले तो क्या है? The forces which are acting parallel to the surface or tangentially to the surface. So that force is called as a shear force.
and the stresses which are developed due to shear forces we call it as a shear stress. अभी आपने फोर्स अप्लाई किया मैं तो इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप करते हैं और जो स्ट्रेसेस shear force की वजह से डेवलप हो रहे हैं इसको हम shear stress बोलते हैं. ओके एंड हियर यहाँ पे shear stress जो है इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं. टाउ we denote shear stress by tau. Why we have denoting this shear stress as a tau or why we are considering इसे अलग नोटेशन क्यों यूज कर रहे हैं और वो दोनों फोर्सेस के लिए सेम सिग्मा यूज कर रहे हैं. ऐसे क्यों? वहां पे दोनों फोर्सेस जो है परपेंडिकुलर होते हैं बॉडी को. यहाँ पे ये जो फोर्स है पैरेलल है तो इसलिए इसको थोड़ा अलग किया. दोनों को वहां पे सेम किए वहां तो टेंसाइल को अलग कंप्रेसिव को अलग शेयर को अलग कर सकते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं किया. क्यों बोले तो टेंसाइल और कंप्रेसिव का सेम है. क्यों बोले तो वहां पे परपेंडिकुलर फोर्सेस जो है परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं. और यहाँ पे पैरेलल इसलिए इसको नोटेशन अलग दे सकते. ओके समझ में आ रहा? नहीं तो आप टेंसाइल के लिए सिग्मा लीजिए उसके नीचे स्मॉल टी लिखे भी चलता. दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस. अगर आप सिग्मा लिखो सी लिखे बोले तो कंप्रेसिव स्ट्रेस. ऐसा लिख के चलता फिर सिग्मा लिखे भी चलता. और बहुत सारे बुक में क्या करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस रहा बोले तो सिग्मा टी लिखे होते हैं. चलेगा कंप्रेसिव रहा तो सिग्मा सी लिखे. shear stress बोले तो tau डायरेक्टली. ओके दिस इज अबाउट द स्ट्रेसेस. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज जो मैं डिस्कस करे तो स्ट्रेस. ये आपका ऑलरेडी मॉडल स्टार्ट हुआ है. आज जो भी डिस्कस करें हियर कम्स अंडर योर फर्स्ट मॉडल. ओके एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस वो ये नहीं पूछते. टेंसाइल फोर्स टाइप्स ऑफ फोर्सेस भी नहीं पूछते. अब मैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्यों बोला आपको ये समझ में आ जाएगा. अभी वो समझ में आएगा तो आपको ये समझ में आएगा. अब मैं डायरेक्टली टेंसाइल स्ट्रेस का डायरेक्ट बोले तो आपको टेंसाइल फोर्सेस मालूम नहीं होता. टेंसाइल फोर्स मालूम हो तो टेंसाइल स्ट्रेस आराम से मालूम हो. दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस लाइक दैट. तो आपको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन यू शुड नो व्हाट इज स्ट्रेस. और आपको व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस ये सब मालूम है. और पूरा सेमेस्टर में पूरा तुम्हारा इंजीनियरिंग खत्म होती है ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है. टेंसाइल बोले तो तुम्हारे दिमाग में आगे फ्रॉम द बॉडी. कंप्रेसिव बोले तो टुवर्ड द बॉडी. शेयर बोले तो अलोंग द साइड टेंजेंट शेयर पैरेलल. ये तीन दिमाग में रखना. ओके दिस इज व्हाट अबाउट द टुडेज क्लास. इफ देयर एनी डाउट यू कैन आस्क. कुछ डाउट रहा तो पूछो. Can you better in the stress strain diagram with the for metal and activity है और वो आ रहा है डिस्कस करेंगे. डिफरेंस क्या है वो बोल दूंगा. वो मटेरियल पे डिपेंड करता है. अभी वो कैसा है मालूम है. ब्रिटल मटेरियल का जो है नहीं वो इलॉन्गेशन नहीं होता. यहाँ भी वो टॉपिक है और इसमें मटेरियल साइंस सेम कॉन्सेप्ट. सेम कॉन्सेप्ट. तुम्हें ये डेफिनेशन वाले के कुछ चलता है क्या भी डिफरेंस नहीं. दोनों एक ही डायग्राम भी सेम. आपको मैं स्ट्रेस डायग्राम होगा माइनस लाता थोड़ा स्टार्टिंग में वो सेम है. बाद में टोटल चलिए बाद में हमारे मैक्सिमम हमारे प्रॉब्लम से चलते उसमें नहीं नोट्स